एंड यस, इतनी पॉजिटिविटी यार, एक बार अपने लिए तालियां बजा लो प्लीज आप लोग जोर से. एंड यू गाइस कैन मेक हल्ला फॉर योरसेल्फ आल्सो ना, ऐसा थोड़ी है कि दूसरे ही करेंगे. लवली लवली सुनील भाई, सुपर्ब. So yes, we'll just let the talent settle down and then we'll start. Too much excitement. रवि सर को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है ना? So good. शर्माओ मत, डराओ मत. All right, one more time, ladies and gentlemen, requesting all you wonderful people to kindly settle down, ताकि हम शो को आगे बढ़ा पाएं. All right. Good afternoon, ladies and gentlemen. Namaskar, pranam, welcome. How are we all doing? थोड़ा और जोश दिखा सकते हैं हम लोग, दिखा सकते हैं. We are here to celebrate something very special. It's not just a trailer launch, it's much more than that. We are here to celebrate the Indian cinema. और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है. Of course, we have all the दिग्गज यहाँ पे फ्रंट रो में, लेकिन जर्नलिज्म की बात करें तो जो दिग्गज जर्नलिस्ट्स हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं. भावना सुमाया जी यहाँ पे हैं, ऑफ कोर्स, द वेरी गॉर्जियस भावना सुमाया कवरिंग हर फेस. मीना जी वेलकम. भारती मैम भी दिख रही थी मुझे, किधर? हाँ, हाय भारती जी. और वो दूसरी मेरी फेवरेट वाली दूसरी एक और भारती जी, ऑफ कोर्स कोमल सर,
दो दो भारतीय जियों के बीच में सर, आप सही कर रहे हो। मैम वेलकम। लिपिका जी चिल्ला सकते हो थोड़ा? हाँ, आई नो, बच के रहना। So good to see you all. On behalf of Rajshri Productions and Geo Studios, I take this opportunity of welcoming all you wonderful people. Give yourselves a big round of applause, please, ladies and gentlemen, because this is something special. You know, this is going to go down in history. लॉन्चेस होते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, लेकिन ये वाला बड़ा खास होने वाला है, बिकॉज यहाँ हम जनरेशंस की बात करने वाले हैं, हम लेगेसीज की बात करने वाले हैं। और राजश्री परिवार के साथ हम सबका कहीं ना एक बड़ा बड़ा गहरा कनेक्शन है, और वो अब से नहीं है, पिछले 76 सालों से है। और इसी सब की बात भी होगी यहाँ पे। और साथ ही दो बहुत ही प्रॉमिसिंग लोग हैं जिनके ट्रेलर को सबसे पहले आप देखने वाले हैं। एक बहुत जाने माने हमारे डायरेक्टर साहब हैं, द क्विंट एसेंशियल डायरेक्टर ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। वो एक तरीके से अपनी वो जो एक जिम्मेदारी है उसको किसी को सौंपने भी वाले हैं। यहाँ पे कुछ इस टाइप की चीजें भी होने वाली हैं। सो एक बार राजश्री परिवार के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और अब मैं जिन्हें यहां बुलाने जा रहा हूं, जैसे मैंने कहा इतिहास बनने वाला है, तो इतिहास तो सनी सर की पिक्चर ने भी बनाया है यार। 500 करोड़ गदर मचा दिया बॉक्स ऑफिस पे। एंड ऐसे ही कुछ हुआ था आज से कई साल पहले, 54 years बैक टू बी प्रिसाइज, जब धर्म जी ने राजश्री परिवार के साथ पहली बार कुछ किया था। और तब जीवन मृत्यु नाम की फिल्म आई थी 1970 में। 100 हफ्तों तक मैटनी शो अलंकार मुंबई में लगा हुआ था। उसके बाद धर्म सर और राजश्री परिवार जो है उनका वो रिश्ता बड़ा गहरा रहा। सुनील भाई, इसको बिल्कुल गौर से सुनना है आपने। एंड यहाँ पे अब मैं भारतीय सिनेमा के दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर्स को बुलाने जा रहा हूं, और शुरुआत करेंगे कमल कुमार बड़जात्या साहब से और अजीत कुमार बड़जात्या साहब से। जोरदार तालियां। आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता। सबसे पहले सर, मैं आप दोनों को हम सब की तरफ से धन्यवाद बोलना चाहूंगा फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन, ग्रेसिंग द स्टेज। और आप यहाँ पर आए हैं एक बहुत ही खास चीज लेके हम सब के लिए। कमल सर, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि धर्म सर के साथ जो एसोसिएशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ एक फिल्म तक नहीं थी, उसके बाद भी आप लोगों ने कोलैबोरेट किया। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट। धर्म जी ने बहुत इंस्पायर किया फॉर द फिल्म शोले, और उसकी वजह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन लिया शोले का। एंड प्रैक्टिकली all over India we distributed the film except a few territories, right, which is history actually. और धर्म जी ने अपनी फैमिली के लिए पार्टनरशिप की हमारे साथ पंजाब टेरिटरी के लिए, जहाँ पिक्चर सुपर हिट हुई जी। और उस समय सर 27 प्रिंट्स जो होते थे वो एक बहुत बड़ी बात होती थी। वो क्लचेस थे बाय द मेन सिनेमा। वो अपने आप को इंजन बोलते थे कि हमारा इंजन है, उसके बिना गाड़ी चल नहीं सकती। तो हमने कहा कि आपके क्लचेस से हम छूट करके और ये फिल्म रिलीज़ करेंगे इन वन शो, मैटिनी शो। और उसके बाद पूरी इंडस्ट्री फ्री हो गई फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द सिनेमास। राइट। थैंक यू सो मच ये हमारे साथ शेयर करने के लिए। सर, ये मेरा सवाल आपके लिए है। अमृत महोत्सव हमारे देश ने मनाया अभी 76 साल, तो सर राजश्री परिवार को भी हो गए एक तरीके से सिनेमा के जरिए देश की सेवा करते हुए। क्या बोलना चाहेंगे सर? Sorry, मैं थोड़ा सा जी। Our father established Rajshri in 1947, 15th August 1947. Wow. So अभी 76 years हो गए। Right. और we've been in the field of film distribution, film production and film exhibition. जी। So all the three field we have been, and it's been a long journey. Memorable one, right, and we hope it will further continue. I am sure, sir, with the younger generation. Absolutely. So on that note, इससे पहले कि मैं आपके लिए ना एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज यहाँ पे चलाऊं, if you had to say something about this promising new director here, अवनीश भाई के लिए if you had to say something, what would that be, sir? Young and very enterprising. Yes. And it will have a special appeal for the youngsters. Wow. That's a big thing.
एंड सर आप यहाँ हैं धर्म सर के संग जो कोलैबोरेशन है उसकी हमने बात की, कैसे आपके संग पहली बार उस फिल्म में काम किया था, कोलैबोरेट किया था आपने। तो अब ना मैं आपसे कहूँगा वो स्क्रीन की ओर देखें सर सब लोग, बिकॉज हमारे पास आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा सरप्राइज है। ऑल आइज ऑन दैट स्क्रीन। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको जी जान से प्यार, बहुत सारी दुआएं। रिगार्डिंग दिस प्रोडक्शन मैं पहले कहूँगा कि नज़र ना लगे, चश्मे बद दूर। राजश्री प्रोडक्शन 47 से आई थिंक दे स्टार्टेड, बरजाठिया साहब उन्होंने ये शुरू की और एक से एक खूबसूरत फिल्म दी, एक से एक डिफरेंट सब्जेक्ट दिया, नए लोगों को लाए, नए अच्छे डायरेक्टर्स को लाए, अच्छे अच्छे हीरो को लाए। मैंने फिल्म जीवन मृत्यु में काम किया था, सत्यन बोस डायरेक्टर थे, बहुत ही अच्छी फिल्म, 100 वीक्स अलंकार पे चली थी। मैं ऐसे ही देख रहा था पिछले दिनों, कुछ यार देखे क्या था, इतनी पिक्चर, इट्स रियली सच ए फिल्म। मैं आपसे भी कहता हूँ, आप एक दफ़ा जाकर जीवन मृत्यु देखिएगा, व्हाट ए मीनिंगफुल फिल्म। और किस सब आर्टिस्ट ऐसा लगता है कि एक्टिंग नहीं कर रहे। तो सनी ने एक दिन मुझे बताया कि पापा अपना राजवीर एक फिल्म कर रहा है। मैं कहा अच्छा, ग्रैंडफादर खुश हो जाता है। किसकी प्रोडक्शन? बोले राजश्री प्रोडक्शन। ओह डन, ये बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। मैं दुआ करता हूँ अभिनीश, हमारा राजवीर, पलोमा, ये नए जब आते हैं एक्टर्स, मुझे मालूम है जब मैं नया आया था तो क्या क्या अरमान होते हैं। सबके लिए दुआएं देता हूँ, ये बच्चों के लिए, पूरी यूनिट को मैं दुआएं देता हूँ कि फिल्म खूब चले और राजश्री प्रोडक्शन का नाम और दोबारा हो, खूब तरक्की करें। लव यू ऑल। ऐसा लग रहा था चलने ही देते हैं ना, थोड़ा और सुन लेते हैं सर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब बिल्कुल वो मौका भी जल्दी आएगा, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ जिनसे मिलने वाले हैं वो इस जनरेशन को अगली जनरेशन तक लेके गए और क्या खूबसूरती से लेकर गए। यहाँ पे मैं बुलाने जा रहा हूँ उनको जिन्होंने गदर काट रखा है बॉक्स ऑफिस पे। गिव इट अप फॉर सनी देओल साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड साथ में द वेरी गॉर्जियस एंड ऑफ कोर्स पूनम ढिलन जी, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे, रब मुझे माफ करे, वेलकम इंसाफ करे। मैम, कंग्रेचुलेशंस। सनी सर कंग्रेचुलेशंस। एंड अब इससे पहले कि मैं दोनों की बात करूं, यहाँ पे वी हैव टू टॉक अबाउट सोनी महवाल, बिकॉज आप दोनों साथ में मंच पे एक अलग भूमिका में हैं आज। लेकिन व्हेन वी गो बैक टू दोज डेज, द गुड ओल्ड डेज, व्हाट डू यू हैव टू से सर? तब पूनम जी की वो क्या क्या छवि थी दिमाग में, और अभी व्हाट डू यू हैव टू से? हेलो, पहले आप सबको नमस्कार। सोनी महिवाल क्या क्या बोलूं उसके बारे में? सिर्फ अच्छी बात। ये पिक्चर शुरू हुई थी जब मेरी बेताब फिल्म रिलीज हुई थी और मैं अपनी फिल्म का सक्सेस क्या वो भी नहीं देख पाया। मेरे को स्ट्रेट अवे ये लोग रशिया ले गए थे, है ना। उसी वक्त हम लोग भागे थे वहाँ पर, एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। उस वक्त कि क्या बातें बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों ने देखी है पिक्चर, बहुत ही प्यारी थी और उसके गाने तो बहुत ही प्यारे थे। अनु ने म्यूज़िक दिया था, बहुत ही प्यारे गाने थे। आज तक आई एम श्योर एवरीबडी इज़ हमिंग देम एंड
listening to them, those songs. And I think I will need a little help from you. अच्छा पूनम मैम, I'll give you a question. मैं यहाँ पूछ ही लेता हूँ आपसे. What is that one thing in this gentleman जो तब से लेके अब तक हर किसी के दिल में और दिमाग में बसे हुए हैं? तब आपने भी वो चीज देखी होगी, आई एम श्योर. What is it? नहीं बोलना नहीं. आई थिंक इन्होंने आफ्टर हिज फादर वो ही मैन की इमेज स्क्रीन पे लेके आए. एंड आई थिंक सोनी महिवाल उनकी एक रोमांटिक टाइप की इमेज में आए थे वो. एंड जैसा आपको याद करा दूं, मैंने कुछ और भी फिल्में की थी उनके साथ, समुंदर, सवेरे वाली गाड़ी और वो सब. बट सोनी महिवाल एक इमॉर्टल लव स्टोरी है वैसे भी, क्योंकि इट्स अ क्लासिक. ऊपर से इट वाज सो ब्यूटिफुली shot, and Sunny and me, if I may say so, we suited the roles really well. And I think जहाँ हम जाते हैं अभी भी we are lucky कि सोनी, मेरी सोनी, सोनी अभी भी लोग बजाते हैं. And he is a very very easy co-star to work with. और मैं सनी का ये कहूँगी, I don't know if you know that, introduction to good music सनी ने मुझे दिया है. बहुत साल पहले he was so fond of music, English music and all international music. तब इतनी आसानी से यहाँ नहीं मिलता था इंडिया में. तो हिज कलेक्शन हम लोग सब चुराया करते थे. एंड वी से सनी इसका टेप बना के दो. उस टाइम तो टेप्स होते थे. वी यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दैट. एंड वी एक्चुअली ग्रोन टुगेदर इन द इंडस्ट्री एंड अदरवाइज. वी वर ऑल्सो यंग. तो धीरे धीरे, एंड नाउ विद गॉड्स ब्लेसिंग आवर चिल्ड्रन आर coming in a film together. Yes. And please give them all your blessings and love like you gave us. Thank you. सनी सर, अभी मैं अगर आपसे कहूँ कुछ टिप्स नाउ एट दिस मोमेंट, जब प्रमोशंस की बात होती है, लोगों के संग जाके बातचीत करने की बात होती है, तो व्हाट डू यू सिनेरियो कैसे चेंज हो गया एंड व्हाट डू यू सी आज के दौर में? मींस आप क्या कहना पूछ क्या रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, इफ यू हैड टू गिव सम टिप्स. नहीं ऑफ कोर्स टिप्स तो मैं कुछ दे नहीं सकता. मेरा बस यही कहता हूँ कि मैं जब बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ. कभी कभी कोई गलत बातें भी बोल देता हूँ, लेकिन बोल देता हूँ. और अभी बच्चे लोगों को बताया जा रहा था कि ऐसे बात करनी है, वैसे बात करनी है. तो मेरा बेटा घबराया हुआ था, पापा वो ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं. मैंने, बेटा तू तेरे दिल में जो आएगा तू बोल देना, और बाकी तो वही बात बोलेगा जो सही बात है. और मेरी आप लोग सबसे बस यही विनती है कि दोनों बच्चे आएंगे, जब बात करेंगे ज़रा ऐसी चीज़ें मत पूछ लेना जहाँ पर वो बेचारे सोचते रहेंगे कि इसका जवाब क्या देना है. एक्चुअली सनी मैं वही बोल रही थी, हमारे टाइम में हमको ये सब नहीं करना पड़ता था. लाइफ हैज़ चेंज सो ड्रास्टिकली विद प्रमोशन, सोशल मीडिया, ऑल ऑफ दैट. तो इट्स अ वेरी डॉन्टिंग थिंग फॉर न्यू कमर्स टू फेस सो मेनी ऑफ यू विद योर कैमराज एंड क्वेश्चंस. So be kind and gentle to them. And I'm sure they will learn. In fact, मैं आज किसी को बोल रही थी कि मैं जब अपनी पहली फिल्म देखती हूँ, कि मैंने जब काम किया था त्रिशूल में, I was so gawky, so awkward and so shy. और इन दोनों को मैंने जब फिल्म में देखा है, you don't feel at all they are newcomers. They have done such amazing work, so much confidence. And of course the credit goes to Avnish also. He's brought out wonderful work from them. Wow. And the whole film has been made with so much love and care. And Suraj ji, thank you for looking after our bachas so well. Thank you so much, ma'am. और अब बात हुई है तो मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे सूरज सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. One of our favorite directors of the Indian film industry, ladies and gentlemen. और एक बहुत जाने माने प्रोड्यूसर अशोक जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं. अशोक ठाकरिया साहब हमारे साथ यहाँ पे. It's such a pleasure, sir. Please, and proud fathers, of course. सूरज सर, सबसे पहले यहाँ पे आज, not as a director, not as a producer, as a father, if you have to say something, क्या आ रहा है वो पहला thought दिमाग में सा? सबसे पहले जो thought आ रहा है मुझे ये आ रहा है कि आज my son is here as a director. Yes. तो मुझे ये हमेशा लगा कि ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा. कभी मेरे को ध्यान नहीं आया कि सनी जी one day he came and he said he wants to be a director. तो फिर मैं चुप रहा. बट फिर मैंने दो ही चीज़ें कही नितिन, जो मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि इफ़ यू हैव टू बी अ डायरेक्टर यू नीड टू वांट टू से समथिंग, तभी डायरेक्टर बनो. सो आई एम सो हैप्पी दिस इज़ अ फिल्म जहाँ ही हैज़ हैड टू वांटेड टू से समथिंग एंड ही हैज़ हैड हिज ओन वॉइस. So Komal ji, that is what I would like to say today.
अशोक सर, दिस वंस फॉर यू. अभी हम बात भी बाहर कर रहे थे, मैंने सबसे पहले आपसे पूछा नर्वस, आपने कहा नहीं ठीक है, जो हो रहा है सही है, अच्छा है, मजा आ रहा है. सो व्हाट डू यू हैव टू से एज अ फादर टुडे सर? Be very honest, very emotional. हाँ. To see your own daughter. I mean, we are so blessed that first break Rajshri में उनको मिला, and our blessings are with them. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. ऑफ कोर्स ये तीसरी जनरेशन है. सूरज सर, मैं चाहूँगा थोड़ा उस बारे में बताइए. फ्रॉम धर्म सर टू सनी सर, पूनम मैम, एंड नाउ यहाँ पे ऑफ कोर्स अवनीश भाई, पलोमा एंड राजवीर. व्हाट डू यू हैव टू से, ये जो पूरा लेगेसी चलती चली आ रही है सर? अभी सर, दिस इज़ ओनली आई कैन ओनली हैव ग्रैटिट्यूड बिकॉज हमें सिर्फ बोला गया कि फिल्म्स जो है वो हमारा धर्म है, कर्म है, जो मेरे ताऊ जी हमेशा बोलते हैं. तो वही चीज़ जब आप देखते हैं कि पहले राजश्री की फिल्मों को जो प्यार मिलता है, आज भी मैं जब जाता हूँ तो लोग मुझे हम आपके कौन के नाम से जानते हैं. मतलब इट इज़ अनबिलीवेबल when you get so much of love, so much of respect. It is only because we have stuck to our values. And like Sunny ji, Poonam ji said, just being simple, just making what we want to make. So this much I can say. जब ये concept अवनीश ने दोनों का सुनाया तो सब्जेक्ट मैंने बोला जो तुम्हें बनाना है बनाओ, बस ये देखना कि राजश्री की ऑडियंस भी आएगी, बस वो उतना ध्यान, कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड एंड मेक योर फिल्म. फिर सनी जी का फ़ोन आया मेरे पास कि सुना है कि बेटे की पिक्चर बना रहे हो, तो राजवीर, आई डोंट नो वेदर यू नो राजवीर अबाउट दिस. सो आई सेड कि हाँ. फर्स्ट थिंग आई सेड, बट सनी जी उसमें एक्शन नहीं है. मैं घबरा गया, मैंने वापस फ़ोन किया तो फर्स्ट थिंग इज सेड नो, आई वॉन्ट अ सब्जेक्ट विच माई सन विल लव, विच ही शुड लाइक, एंड इट शुड बी समथिंग फ्रॉम द हार्ट. देन आई रिमेंबर पूनम जी का मैसेज आया टू माई सिस्टर अनुराधा. तो अनुराधा जी ने कहा कि ऐसे पूनम जी ने कहा पलोमा के बारे में. सो पलोमा, फर्स्ट फोटोज केम ऑफ यू विद अ गन. हाँ, एक फ़ोटो थी पूनम जी गन वाली आई कोई. तो फिर बट बोथ मी एंड अवनीश सॉ एंड वी सेड दिस इज़ मेघना. सो ऐसे ही तब भी ऐसी फिल्में बनी है, अब भी ऐसी फिल्में बनी है, कोई चलती है कोई नहीं चलती है, बट जर्नी हम लोगों ने तब भी एंजॉय की और आज भी बहुत इन बच्चों को देख के वी आर एंजॉइंग. बहुत मेहनत की तीनों बच्चों, मेरे लिए तो तीनों का लॉन्च है आज, और इतने सारे और लोग. एब्सोल्युटली, तब भी और अब भी की बात कर रहे हैं. एक आखिरी चीज़ सर, लव स्टोरी के साथ ही आपने भी डेब्यू किया था और यहाँ भी वही होने वाला है. हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ. I can only wish, but 35 years, I also was a newcomer. I also had a hero heroine like this, as nervous. वो भी एक जोश में बनी, ये भी एक जोश में बनी. उसकी भी पहले दिन बारिश ही बारिश थी, हमारी फिल्म में भी बारिश ही बारिश हुई. बस I can only say that all our blessings. We are nervous parents today. That's all. थैंक यू सो मच. सबके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. यहाँ पे we'll have a quick photo op with the legends. मैं कुछ बोलना जी प्लीज सर, चाहूँगा, प्लीज. right? आप लोग राजश्री प्रोडक्शन में तो जानते ही हैं, हमेशा इन लोगों ने, जैसे डिज्नी फिल्म्स हैं, वो हमेशा एक तरह की फिल्म बनाते हैं जो फैमिलीज के लिए होती हैं. एंड दैट्स व्हाट दे हैव ऑलवेज बीन डूइंग एवर सिंस. कभी बहके नहीं. और ये फिल्म भी उसी तरह से है. आप लोग बोलेंगे इन्होंने फिर से शादी के ऊपर है या उस तरह की है, बिकॉज हमेशा दे ब्रॉट दोज ऑल द फैमिली में वैल्यूज़ क्या होती हैं, शादी कैसे होती है, कैसे लोग पूरे परिवार दूर दूर से आके इकट्ठा होता है और किस तरह से एक दूसरे से मिलते हैं, क्या क्या नहीं होता, जहाँ इमोशंस और बच्चे जो दूसरे परिवार ये परिवार से मिलते हैं और पूरे घुलमुल से जाते हैं और सब तरह की फेस्टिवल्स होती हैं. ये फिल्म भी बेस्ड वहीं है, लेकिन ये फिल्म आज की है, आज की जनरेशन की है, क्योंकि मैंने देखी है. और मैं बस यही कह सकता हूँ, मेरी एक फ़िल्म थी मैंने जो बनाई थी, सोचा ना था, शायद आप लोगों को अच्छी लगी होगी उस वक्त. आई रिमेंबर आई शोन देम ऑल द जर्नलिस्ट दैट टाइम बिकॉज आई वाज सो प्राउड ऑफ दैट फिल्म. एंड आई थिंक दिस फिल्म इज़ नथिंग लेस दैन दैट और मे बी मोर, क्योंकि इस फिल्म में हमारे डायरेक्टर साहब ने जो किया है बहुत बढ़िया किया है. बिकॉज ओवर हियर ही इज़ ब्रॉट आउट द आज की जनरेशन वेडिंग को किस तरह से देखती है और रिलेशंस क्या होते हैं. जैसे लिव इन रिलेशंस होते हैं,
पेरेंट्स का होता है, जॉइंट मीन्स वेडिंग्स करवाते हैं, अरेंज मैरिजेस होती हैं, ये सब चीज़ों को पकड़ के उसने जिस तरह से सब कैरेक्टर्स जितने भी इस फिल्म में हैं सबको जिस तरह से उसने इकट्ठा किया है, और सबकी अपनी अपनी एक दर्द है या कहानी है, उनका विश्वास है कि मैं ऐसे रहना चाहता हूँ, ये वो पूरा इस फिल्म में आता है. तो आई एम वेरी श्योर दिस इज़ very deep rooted today's youngsters film, and I can vouch for that because I've seen it. So that's what I would like to say. Thank you so much, sir. Thank you so much. And now it's time to take a look at the trailer. लेकिन उससे पहले जैसा मैंने कहा, we'll have a quick photo op. हाँ? जी. एक बैठ के और फिर खड़े करके लेते हैं. सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको. खड़े रहना. जी. अभी रख दो बीच में नहीं. इधर से बाबू. बेटा इधर. कमाल. Was not in a position to do anything. I hope I did. Thank you so much. So please be seated and we'll play the trailer.
बहुत सारे लोग इस समय ये सोच रहे हैं काश हमसे भी वक्त रहते उसने कह दिया होता मत जाओ ना, है ना? आई ना, बहुतों को अपनी लव स्टोरी याद आई ना? दिस इज सो रिलेटेबल, यू नो, इट्स सो फ्रेश एंड सो अमेजिंग. एंड अब ये ट्रेलर देखने के बाद मैं नहीं मुझे लाइमलाइट इतनी नहीं चाहिए. व्हाट वील डू इज इट्स द मोमेंट जब उनको आपके सामने सबसे पहली बार लेकर आए, जिनके लिए हम सब यहां पर आए हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, please put your hands together for Rajveer, Deol and Paloma, ladies and gentlemen. Make some noise. Here we go. तुम और मैं दोनों और सफर, तुम और मैं दोनों हो, तुम और मैं दोनों और सफर, तुम और मैं दोनों हो, तुम और मैं दोनों. Wow. Can we quickly have the mics? First of all, congratulations to the both of you. वो रुके या नहीं रुके ultimately? Like when you say कि मत जाओ, what happened? आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी. देखा, बिल्कुल परफेक्ट जवाब. 5 अक्टूबर को पिक्चर देखनी पड़ेगी. Give it up for them, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां. This is what you call a dream debut, right? Rajveer, your views on this. And when you know we saw you with your father, Sunny sir के साथ, आप उनके साथ चल रहे थे कंधे से कंधा मिला के. आज when he's sitting there और आप यहाँ स्टेज पे खड़े हो as this super lead actor, क्या बोलना चाहोगे? I feel really confident with Dad being here and also very nervous. Right. Yeah. Paloma, for you, you know the family is here, the entire media is here. Already इतनी buzz हो चुकी है इसको लेके कि दोनों कमाल के हैं. What do you have to say? We're very excited and we've been looking forward to this moment for quite some time now, and I hope that you guys enjoy our film. And Avnish, Rajveer and I have worked really hard, and with a lot of passion we have created this film, so I hope that you guys accept us and like our work. We have a lot of questions आप दोनों के लिए, लेकिन उससे पहले कप्तान साहब, of course, Avnish Suraj Barjatia, ladies and gentlemen, the director of this movie is here with us. Of course, जोरदार तालियां बनती हैं. Welcome, congratulations, please. They don't prepare you for this. Okay, Avnish, उसको soak in कर लीजिए पहले पूरे माहौल को, और अब मैं पूछूंगा उनका ड्रीम डेब्यू एट द सेम टाइम, यू नो, इतना सारा प्यार आपके लिए. एंड एज आई सेड, देयर इज अ लॉट ऑफ बज़ दोनों को लेके पहले दिन से, पहले लुक से. हाउ इज इट फॉर यू? लाइक क्या चल रहा है दिमाग में? It's honestly incredible. I don't think that any of us thought this would happen. You just dream of making, for me personally, you dream of making a film. एक पिक्चर बनानी है, बस मन से बनानी है. And to get this kind of a stage to show it to the world, what more could we have asked for? Just very, very grateful, so happy, and to have such stalwarts at the trailer launch. Of course, families, also from the media. I mean, we've all grown up watching and reading. Couldn't have asked for anything more. हाथ थोड़े कांप रहे हैं. जहाँ तक पूछने की बात है, I'm sure आप लोगों के पास बड़े सारे सवाल हैं. So अब it's over to you. Can we quickly have the chairs? We all liked it, right? We all loved it, right? We can make some more noise for this amazing trio here. Yes, that's what I'm talking about. Okay, जी, so it's over to you. कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? मेरे पास से आ रहा है पहला सवाल. जी बिल्कुल. राइट में आपके. नमस्कार, मैं रेखा खान हूँ नवभारत टाइम से. अवनीश, पलोमा, राजवीर, मैं आपको तीनों को, सूरज जी को, सनी जी को, पूरी टीम को बहुत दिल से बधाई देना चाहूँगी. बहुत सारी शुभकामनाएं. ट्रेलर बहुत ही खूबसूरत है और मुझे लग रहा है कि ये फिल्म इंशाल्लाह सुपर डुपर हिट होगी.
जी अवनीश, मेरा सवाल आपसे है। आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं भी किसी न किसी तरह आपके परिवार से कनेक्टेड हूँ। जो सूरज जी की फिल्म थी मैंने प्यार किया, उसके सारे गाने, मतलब उसके काफ़ी गाने जो थे, मेरे फादर इन लॉ असद भोपाली साहब ने लिखे थे। जी, मतलब जिसको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो वो एक लव स्टोरी थी, और राजश्री की एक परंपरा है जो प्यार को, रिश्तों को, संस्कृति को, परिवार को जिस तरह से दिखाने की। तो मैंने प्यार किया में एक डायलॉग था कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। जी, तो मैं ये चाह रही हूँ कि दोनों में ऐसा क्या है जो, एक होता है ना कि एक प्यार को, क्योंकि ये बात अभी सूरज जी भी कह रहे थे, सनी जी भी कह रहे थे, सभी जानते हैं कि प्यार जो है अब वो एक रिलेशनशिप में तब्दील हो गया है। पहले हम कहते थे कि हम मोहब्बत में पड़े हैं, इश्क में पड़े हैं, लेकिन अब लड़का लड़की कहते हैं कि नहीं यार, मैं रिलेशनशिप में हूँ। तो आपने तब से लेके मैंने प्यार किया से लेके दोनों तक प्यार को कितना इवॉल्व या प्यार को किस अलग ढंग से पेश किया है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी। नहीं मैम, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। एंड आई मीन असद भोपाली जी तो इज़ such a legend. It was an honor at Rajshri too. I mean, मैं पैदा नहीं था उस वक्त, but it was, I mean, his songs are still celebrated today. Ma'am, regarding love, you know, love is a very complicated thing. उस वक्त भी complicated ही था, इसलिए I think it connected with everyone in their own way. मैंने प्यार की देखता हूँ, बेताब देखता हूँ, so I still connect with those emotions even today, even though, like I said, I was not born at that time. So love has, I think, transcended time, has transcended all boundaries. And ma'am, Dono is also a love story. It also talks about the complications of love. You know, आज ये ज़माना आ गया है that today we as individuals have the ability to make decisions which maybe us, you know, our earlier generations were not able to. But बहुत बार ना हमारे खुद की जो अंदर की ये demons होते हैं, they start to talk, they start to act as roadblocks rather than पहले जो होता था मुगल आज़म के टाइम से. So ma'am, this film is about the complications that love can give and also the strength that love can give. And we've just tried to go about it and tell a story about love in different ways. You know, जैसे हमारे ट्रेलर में दिखाया गया है, love happens multiple times in life sometimes, and sometimes you need closure, sometimes you have to move on. And this is the story of two people. इन दोनों की अलग अलग प्रेम कहानियाँ हैं, किस तरह ये दोनों कहानियाँ आके जुड़ जाती हैं. That's what Dono is about. Hi, straight here. So I have a question. I think a lot of people will agree today, like you said, and like you've beautifully portrayed. All of us are having issues with love and relationships, and the biggest issue is to deal with moving on. Closure is something that we often don't give so much importance to, but it's possibly the most important thing to move on to another chapter, like you've said. In real life, has it ever been difficult for you guys to move on from anything and find closure? I think all of us find closure in our own time and space. It just hits you randomly, and it gradually, you learn from it. And I mean, every second, no matter how old you are, there's a closure that you chase for something that you feel complete for. And this movie really, really talks about that. And it shows the character's journey that I portray in the movie that I'm so blessed to be. So yeah, closure is something, you can't really describe it. It's a feeling. And once it hits you, you feel like you found the final piece to the puzzle. And you can see the whole picture and you go like, what an idiot. I was such an idiot. Anybody else? I don't think we could give a better answer than that. Yeah. That's pretty much it. Closure is such an important concept. I don't think it gets talked about enough. That's why when we were working on this subject, we thought that it could be something that could be a special story, and we could really do justice to this aspect of it. It's an important thing which doesn't get talked about a lot. I hope after this film, someone might pick up something from here and it might help someone. Hi, this is Sohail over here from Instant Bollywood. Avnish, you, Paloma, and Rajveer and the entire family and the team, a big congratulations. The trailer is superb. You are looking very, raw,
कह सकते हैं हम, और बहुत ही नेचुरल लग रहे हैं. जैसे लग रहा है कि यू नो वी कैन रिलेट, लाइक ऐसे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कि हाँ ये हमारे साथ या कभी हुआ था या किसी के साथ हो रहा है. अवनीश, मैं जानना चाहूँगा जैसे कि जो बरजात्या फैमिली राजश्री की तरफ से जहाँ पर भी जो कल्चर को हमने बहुत मतलब तवज्जो देते हैं, पर आज की टाइम की जो लव स्टोरी है, तो कभी आपने आपके पापा से कहा था कि थोड़ी सी लिबर्टी, यू नो आज के वक्त की स्टोरी, या कभी राजवीर या पलोमा ने कहा होगा नहीं इस तरह से थोड़ा होना चाहिए, तो कुछ लिबर्टी आपने ली है? It's a very loaded question. नहीं. To be very honest, like my father said earlier, यही बोला था कि make a film that's you. What you think about love, what you think about relationships, and what you think about family. Rajshri has always made films. This I've heard from my seniors. Rajshri has always made films which my great grandfather had said कि a film that I can see with my in-laws, with my elders. And I honestly believe कि आज जो मैं film अपने in-laws या अपने family के साथ देख सकता हूँ, I feel it's more progressive today. And I can see and talk about things that maybe my grandfather, my great-grandfather couldn't discuss with his relatives. And that's honestly what this film is. It's a Rajshri film. I come from the Rajshri family. I don't think I can take that away from how I view the world. So to answer the question, it is today's story. But like I said, love transcends. It's been the same throughout. So there's some person who's pining for someone who needs closure. ये बरसों से हम देख ही रहे हैं. That's honestly. I wanted to talk about Avnish, since you had asked him that question. He's so open-minded, honestly. I felt, even though he's been so thorough with his work, he was so prepared in every category, whether it was his sound or whether it was editing or whether it was on flaws. But he was still so open-minded in general to take in any kind of creative collaboration. And it was so much fun working with him. So thank you for trusting me with Meghna, honestly, and giving me that chance. Hi, Paloma. What was the question again? It was long answers. Yeah. Honestly, when I first heard the script, it was very fresh. It was extremely fresh. And Avnish was writing the script for about 4 years. So anything I would ask, he already had a counter to, because he must have thought about it like year 1 or year 2. So I felt stupid butting it. I'm like, this guy has done all his homework. And I had full faith and trust in him. Hi, Paloma. Avnish, I Rajveer, have an Paloma. answer. Hi. Paloma, your mother, when she started with Noori, and from there to in her entire career, she has probably done one of the most iconic romantic roles. When you are picking up a film which is a romance, are you scared that you will be drawing comparisons, probably one of the best performers you had in-house itself? I think it's natural. Comparisons are inevitable, definitely, when you're from such lineage. I think as newcomers, and we're all newcomers here, we can only hope that people like our work, people accept us, and we get more chances to prove ourselves. And I hope that we get the same love that our parents have gotten and, his family have gotten for years. I mean, eventually we will probably have to create our own identity, and I hope that happens. Rajveer, Paloma, and Avnish here on the right, यहाँ पे, Simran Singh here. बहुत स्वागत and congratulations to you guys and to your parents. This looks really promising and relatable. मेरा सवाल राजवीर पहले आपसे फिर अवनीश आपसे भी है. राजवीर, मेरा सवाल ये है कि हमने जो लव स्टोरी देखी है, तो एक बेताब राजवीर मैंने कहीं ना कहीं अर्जुन तो देखा है. तो वही, so was there a deliberate attempt कि you want to start with a love story, because everyone will be like यार Deol family दा है तो फिर action picture तो आना चाहिए. I mean, first perception is that I'll be beating up people and screaming. But when I heard the script, this was a character that I felt like was a character and not a hero. I felt like he was an individual I could really sink my teeth into, and I thought I could really, my skeleton was perfect to fit in his skin. So it was without a doubt. I don't really plan things, what movies I want to do. If I hear a script or a character I really like,
And I was so lucky that I got to hear this, and yeah, I'm just really blessed and lucky that this script came to me. अवनीश, आपसे सवाल ये बनता है कि अभी आपके फादर साहब ने कहा कि जब ये मेरे पास आए तो मुझे लगा वो ये कहना चाहेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है. So अगर आप थोड़ा बता सके, when was the time when you actually found your interest in directing and you got inclined towards directing films and telling stories, taking forward the legacy of Rajshri production. अगर आप इसके बारे में कुछ कह सके तो. जी बिल्कुल. As a kid, I mean, I was मेरे grandfather रहे नहीं अभी, Raj Babu, but he was my favorite human being. He was film producer. A lot of people might remember him. I would spend all my time with him. तो उनके साथ रह कर थोड़ा ये भी, and he used to take us everywhere. My grandmother passed away when we were very young. We became his life, my brother and I, all three of us. And he would take us everywhere. तो ये हो गया, बाबा जी की तरह film producer बनेंगे. So then my father said, ठीक है चलो, then you want to be a film producer, बाबू जी हैं, दादा जी हैं यहाँ पे, तो CA करो, अच्छा ही है. But I don't know, as you grow older, you start to appreciate cinema as more than commerce. You start to appreciate cinema for the intricacies of story. कि एक scene के बाद ये scene क्यों आया, इस dialogue के बाद ये dialogue क्यों आया, इस moment के बाद ये moment क्यों आया. And I just started falling in love with that, as I was growing older. So when I went to my father, finally he said, "Arey bhai, ये कहाँ से आ गया यार?" But no, so that's where it actually changed for me. You start to appreciate cinema as an art rather than business. And that's honestly what inspired me so much. Hi Rajveer, Paloma और Mr. Barjatya. हाँ, आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत. मैं संजय मिश्रा हूँ नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से, और ढेर सारी शुभकामनाएं क्योंकि आज आपकी फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है. मैं राजवीर आपसे जानना चाहता हूँ कि आज आपकी दादी, मम्मी और धर्म जी ने क्या कहा आपसे? वो obviously बहुत खुश थे. They told me, Rajveer, just be yourself. You're blessed with a good personality, and so yeah, they said just be yourself. Don't try putting on a front. Don't look at your dad's image or try to be him, or your grandfather's or your chachas. Just because you were raised well, and just be yourself and natural. Hi, to your left. Hi, my name is Sonal from CNN News 18. My question is for Rajveer and Paloma. When was the first time you all thought that you all wanted to be in front of the camera? And, what was the reaction in Rajveer's case from Sunny sir, and in Paloma, in your case, when you went up to Poonam ma'am and told, and was there anything that they spoke to you about being in this industry? Growing up in a film background and everyone acting, and you thought this is how you got the bread home. You thought that this is normal. Everyone does this. When you grow up, you realize, this is weird. This is very unique. So I was always influenced by movies. I always loved acting. I used to get a really good joy. I feel like you could really disguise yourself with a character because it's hard to be yourself. The advice they've given me is just work hard, work on your craft, because don't try to be a star. Try be an actor first. Your characters will make you a star. So that's what I do from here. Put my eyes down and I just work on my craft. Hello. Paloma, the answer for the same question. Hello. मेरा नाम पद्मा जी से है. एक मिनट. मैम मैं आ रहा हूँ आपके पास. I'll come. जी, Paloma. You'd like to add something? Yeah, I think I'm very lucky because my parents have been damn supportive of anything that I do ever since I was a kid. Whatever hobbies I had, they would always encourage me to take some class, or even if it's painting, for example, during lockdown, mom would buy me paints and canvases to encourage my hobbies and all of that. So when I did decide to tell them that I'm very serious about this profession, I don't think they expected it, but obviously they expressed how difficult this line is and how much goes into into this craft and profession. But I hope I'm making them proud right now, and they've been well, like, I don't know how to explain. I get really emotional talking about how close we are. I'm sorry. हेलो पलोमा जी, आरती सक्सेना. मेरा सवाल आपसे है कि पहले प्यार और ब्यूटी को भोलापन से, मतलब जैसे प्यार है तो उसको इनोसेंसी में माना जाता था और ब्यूटी को भी इनोसेंसी में माना जाता था. आज के टाइम में प्यार को रिलेशनशिप
और इंटेलिजेंसी भी माना जाता है। तो आप मतलब जो अब हीरोइन बन के आ रही हैं, तो आप अपनी मम्मी से कितनी डिफरेंट है? आपकी मम्मी ब्यूटीफुल भोली भाली थी, तो आप उनसे कितनी डिफरेंट हैं? You know, that's so true about mom. Actually, in every film I have been in awe of her presence and her performances. She just charms up the screen, honestly, with her purity and positiveness, I think. What was the last part of the question? Sorry. ब्यूटीफुल और भोली भाली थी। हाँ जी। तो आप कैसे अपने आप को मतलब पेश करेंगे फिल्मों में? I think, I hope कि मेरा काम speaks for itself, honestly, and I hope कि मेरा खुद का identity eventually आ जाएगा। मैं I can only hope for that. और बाकी आरती जी बंदूक वाली फोटो तो गई थी, सर ने बताया, पता ही है आपको जी। और राजवीर जी से सवाल है कि मतलब सनी जी ने जब शुरू किया था तो लव स्टोरी से शुरू किया, लेकिन उनकी जो इमेज थी वो एक्शन वाली थी। कुछ कुछ आप भी वैसे ही लग रहे हैं, तो मतलब आपका भोला भाला ही चेहरा है, लेकिन एक्शन है और लव कर रहे हैं, तो ये मतलब कैसे आगे बढ़ेगी गाड़ी? I guess I'll be yelling soon. Watching Dad, उनके सारे movies growing up, honestly, I just always wanted to beat evil and free the innocence from evil people. I actually wanted to join the army also after watching Dad's movie, because he used to just get me so charged up. I guess it's just in my bones and blood, and I couldn't escape it even if I tried a romantic movie, I guess. It's just there. और डांस भी आप सनी जी जितना ही करते हैं? अच्छा। I worked hard on the dance and I was very carefree, and I hope I become number 2 in the family. Avnish, yeah, on your left, yes, yeah. Avnish, Nitin introduced as Avnish Suraj Barjatia. Does the enormity hit you that Suraj Barjatia's son is making his debut as a director after 35 years? Does the enormity of Suraj Barjatia's son hit you? Honestly, very honestly, I don't think there's any pressure. But what it is, it's a responsibility. I think it's very important that that we made a film which lives up to the name and the legacy of not just my father, but also Sunny sir, Poonam ji, the Rajshri, and the Rajshri brand. That responsibility was always there in the back of our head. We can't take this opportunity lightly. We have to make a good film. We have to make a film that we can be proud of, that they can all be proud of. Hi, Rajveer. Over here, straight, towards your left. Hi. Standing over here. Rajveer, when Sunny ji had debuted, everybody expected him to continue the legacy of what Dharam ji had built, which was the action, macho man, he-man avatar, and he did it splendidly. But those days, the audience kind of expected that. Do you think so now for the audience to wholeheartedly embrace a star kid, it's more important for you all to carve your own niche rather than continue that same legacy? Then you all get better acceptance? I agree with that. I think it's important to have your own individual stamp on this industry. Otherwise, they just expect you to follow your dad's trait, your grandfather's traits. So yeah, that's why I really like the subject when Avnish narrated it to me, because it was so different to what people would expect me to choose. They would choose to beat 100 people up, scream and have a big body and everything. But unfortunately, I was in love with the craft. I just loved acting. So I noticed if I get typecasted in that, it's not a good idea for my first movie. So I think it's very important to have your own individual stamp in this industry. Yeah, hello. Hi, Shilpa here from Mayapuri magazine. जिस तरह से राजवीर आपके लिए एक सवाल है, जिस तरह से अवनीश जी के बारे में सूरज जी ने कहा कि वो कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंट शायद बनना चाहते थे, तो राजवीर इसके आपका किस तरह से रहा इसके बारे में अगर बात करें कि एक्टर ही बनना था या फिर कुछ और आपको कहीं जाना था, अगर बात करें? Honestly, my parents hated the fact of becoming an actor. They always wished that I should have studied or done something else in this life, because this line is so unpredictable.
You're happy for 1 second, you're miserable, you know, getting work. I mean, Dad got a hit after 22 years. So they were worried how mental, such a mentally draining line. And unfortunately, I just fell in love with acting. I just couldn't get. On your left, hi. राजवीर, आपका फेवरेट हीरो कौन है जिनसे आप बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, जिनकी फिल्में आप बहुत देखते हैं? Growing up, तो पापा थे, and even now, I mean, no one can do what he does. A lot of actors that also inspired me from Hollywood, from India. I mean, I suck at lists because I just always draw a blank. Like today, this person inspired me. Last week, it was someone else. I just suck at making lists. So कभी ऐसा कोई दिन आ गया आपके पापा की गदर 3 और आप दोनों की कोई फिल्में साथ में आ गई सिनेमा में, तो वो कैसे प्रेशर हैंडल करेंगे? If there's a good script, then I won't have no pressure. It'll be awesome. You'll see me yelling as well. Okay, great. पलोमा जी, आपका फेवरेट हीरो मेल फीमेल जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड, जिनकी आप बहुत फिल्में देखती हैं, ऑन योर लेफ्ट, हाय. जिससे I get inspired, you said? Yes. I think I liked what Rajveer said a lot, yeah, that your inspiration keeps changing all the time. You know, you can be inspired by everybody in some way. Thank you. All right, we'll take 2 more questions. Hi, Rajveer. Hi. Here. So the trailer is beautiful, and so as we saw in the trailer, it says that it talks about a special destination. So I would like to ask all 3 of you that what is a special destination for you guys? My nanny's house. Can't get enough of it. Rajveer, either side. Rajveer, you've been thrown out to the world now. How would you take the challenges and make it into opportunities? I think it's important to work on yourself non-stop. You're always learning something. And you can't avoid mistakes because we never made any. So you'll never know what a mistake is till you make one. And for opportunities, I think your work speaks for yourself. If I'm good and consistent in my work, opportunities will be created. That's all secondary, I think. I think you should really work on your craft. Because right now I may look good, but if I'm 60 and 70 and I'm old, I got to better be a good actor because looks just don't carry you. It's your craft. So yeah, that's what I would say. I would say work creates opportunity. Your work will create opportunity if you're good. Avnish, Rajshri is always known, on your left, yeah. Rajshri is always known for his music actually, you know. तो आपके पर भी कितना प्रेशर था कि एक स्टोरी तो अच्छी कहनी है, उसके साथ साथ म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा देना है, और शंकर एहसान लॉय लाइक यू नो, मतलब आपने उनको क्यों चुना एक्चुअली? व्हाट वाज इट लाइक, यू नो, फर्स्ट टाइम था? जी नहीं, बिल्कुल. दिस वाज ऑलवेज सपोज्ड टू बी अ लवली म्यूजिकल फिल्म. हमारे 8 गाने हैं इस फिल्म में, एंड इट वाज वंडरफुल टू वर्क विद शंकर एहसान लॉय. एहसान सर इज हियर, एंड इरशाद कामिल जी. I was very, very blessed to work with them, and they've given us an outstanding album. Iska title song is already becoming popular. Arman is here. He sung it so well for us, and I really hope that everyone loves the album and appreciates it. Well, अभी पादुकोण साहब भी म्यूजिक की बात कर रहे थे यहाँ पे, so मैं गुजारिश करूँगा, Arman is here, so why not? Let's have him up on stage, ladies and gentlemen. Dono, the title track, इतना सारा प्यार, organically it has grown and become massive. So Arman, congratulations and thank you for the lovely track one more time. Yes, so क्योंकि मैंने कहा ना एक और सरप्राइज थोड़ा सा रिवर्ब दे देना मुझे. Arman, before we Singing के बाद, हाँ, before we ask you about the song, जो कि जैसा मैंने कहा massive हो गया है, you have to tell us about these 2 wonderful people here, because I believe you all are childhood buddies. I have to, yeah, मैंने ये कभी शेयर नहीं किया है, लेकिन राजवीर और पलोमा मेरे चाइल्डहुड दोस्त हैं. हम तीनों ने, दोनों नाम मूवी का है, लेकिन हम तीनों ने you know, we've seen life together, we've grown up together, and I think
इसे कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं, दैट वी ऑल हियर टुगेदर ऑन द सेम स्टेज एंड आई संग द टाइटल सॉन्ग ऑफ द डेब्यू मूवी. आई कुडंट बी प्राउडर. मुझे बहुत खुशी हो रही है एंड आई कांट वेट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस टू वॉच द मूवी, लव द एल्बम एंड गिव देम ऑल योर लव. एंड अभी देखो हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर ली है ना, बहुत स्वीट बातें कर ली. नाउ गिव अस सम गॉसिप. थोड़ा सा बताओ कि मतलब आधे लाइक इतना ही शांत या वो. अरे हम लोग बहुत इनोसेंट लोग यार, कोई गॉस वॉस नहीं है हम लोग के बीच में. आप लोग क्रिएट मत कर देना बस. वो एक हमने क्या डिसाइड किया था बाहर, आप हमको मसाला देने वाले हो, आपने पलटी मार दी. नहीं मेरा मसाला सिर्फ अच्छा गाना गाना होता है बस. दैट इज ऑल. तो हो जाए दोनों का टाइटल ट्रैक फॉर ऑल ऑफ अस. आई वुड लव टू सिंग दैट फॉर ऑल ऑफ यू. Oh, we can make some noise for Arman Malik, ladies and gentlemen. Yes. Sorry, lyrics याद नहीं तो I'm just gonna look at it. है कोई ख्वाब या खुशी जो साथ है अब मेरे, बोलूं ये कैसे. तेरा ही था तेरा ही है जो पास है सब मेरे, बोलूं ये कैसे. बातें होठों पे ठहर सी गई, बातें राहों में बिखर सी गई. तू दिल की बात जान ले, ये बोल दे तुम मेरे, बोलो ये कैसे. तेरा ही था तेरा ही है जो पास है सब मेरे, बोलो ये कैसे. मेरी खामोशी को जान ले, काम तेरे बिन मेरा ना चले. हो तुम और मैं दोनों 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 और सफर. तुम और मैं दोनों 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 राहें तन्हा तन्हा सी, दिल है बहका बहका सा, लेके आई है सुबह जैसे इश्क की हवा. मैंने ऐसे ही जीना है मतलब के तुम हो मेरी. वो लवली लवली. एंड यहाँ पे जनरेशंस की बात हो रही है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट जनरेशंस एंड दैट टैलेंट. तो सर, नोटेड म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर मलिक साहब हमारे साथ. सर अभी आप बड़े गौर से देख रहे थे, व्हाट डू यू हैव टू से यहाँ पे इस परफॉर्मेंस के ऊपर? वी हैव टू टेक योर व्यूज ऑन दैट. You know, actually, this is a very exciting moment. I just want to share with Avnish that 35 years of my life I have spent going in and out of Rajshri Productions, and today Arman fulfills that dream. And I love this song very much. Rajveer, I love you so much. Can't express further. Paloma, God bless you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Arman, for that wonderful song. Would request you to be seated. Before I leave, I just want to give a huge thank you to Shankar Ehsan Loy, sir. Ehsan sir is right here. I can't see him. He's right there. Lots of love to you, sir, and lots of love to Irshad Kamil, sir, as well, for giving such a beautiful album. I think music and movies go hand in hand, and I'm so glad that I could be a part of this beautiful album. And thank you, Avnish, for trusting me for this movie, because you know it's always tricky casting a voice for debutants, and I'm glad I could suit Rajveer on screen. Thank you so much. Thank you so much. A big round of applause for Arman Malik, ladies and gentlemen. And now would like to invite on stage one more time Sunny Deol sir, ladies and gentlemen. Poonam Dhillon ma'am, one more time. Surat sir and Ashok sir, एक बार वापस से मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप लोग यहाँ पर आएं, because I'm sure ये सरप्राइज मैं अगेन आप लोगों को दे रहा हूँ. I'm sure आप लोगों के पास कुछ सवाल होंगे. If just in case you want to ask something हमारे legend से, so you can do that. जी क्विकली कहाँ से? यस विल जस्ट टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस. हाँ सर का माइक ऑन करो. हेलो जी आई. हेलो, मेरा सवाल सनी सर से है. सनी सर इस तरफ, इधर सर, आपके लेफ्ट में सर. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. सर आपकी गदर 2 वाकई में बड़ा ही धमाल मचा रही है. हर कोई आपको ऑन स्क्रीन जब एक्शन करते हुए देखता है ना, पागल हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं. क्या आप चाहेंगे कि आपका जो बेटा है वो भी आगे चलकर इस तरह की मूवी करे?
देखिए मैंने जो करना था किया, पापा ने जो करना था किया, अब इनकी बारी है, जो करना है करेंगे। जी थैंक यू सो मच। सिमरन। हाँ जी, आप दोनों से सवाल है। आप जब अपने बच्चों को भी देखते हैं, जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली इन्होंने जवाब दिया, हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस? मतलब फर्स्ट टाइम फेसिंग द मीडिया, बट द क्वेश्चंस दे वर वेल प्रिपेयर्ड, द कॉन्फिडेंस वाज देयर। I don't think they were well prepared. They just came here and you'll ask them the right questions and they answered them rightly. That's what it was. Well, I definitely do think that today's children are way much more aware than we were, and they work way harder than we did. सनी, आपने बेताब में इतना काम किया था? मुझे लगता है जितना काम मैं पलोमा को देखती हूँ करते, I feel we didn't work half as hard. Over there, we didn't have to do all this. That's why. They really work hard on themselves. I must say that. So I appreciate that a lot. Two more questions and Sunny, yes. is Sunny this side on the right? लिपिका तुसी अज तक मैनू इंटरव्यू नहीं दिता, कद्दों दी मंगन डई हां। नहीं मैं इंटरव्यू जरूर दवांगा। मैं कि पिछे इन्ना दौड़ रहा सी, नट रहा सी चारों तरफ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਿਕਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। I know, very nice. We have नहीं करेंगे supported you. जरूर। No, I'll We have definitely do supported it. I'll Dharamji and definitely. supported you. And now my question is, you know, कि you're throwing out your son आप बहुत throw out to the throwing world. out. Throwing out to the world of glitz and glamour. Congratulations to all of you, especially Deol family and Rajshri Productions. This is your 76th year of Rajshri Productions. So my question is to Avnish, Paloma and Rajveer. How much pressure you three of are feeling because this is your debutant project? And what are that one quality that you have inherited from your legendary parents? जैसे मैंने कहा मैम कि it's no pressure at all, just a responsibility, that's all. We have to make a good film, we have to do them proud, that's all. Paloma, what have you learned from Poonam ji? Beauty, glamour and talent. And Rajveer, you too say something about the parents. What have you learned from them? Is this on? Yeah? Okay. You know, the qualities that I have imbibed from both my parents, my entire family actually, they're very deep rooted. I think the principles that my parents have instilled in me will hopefully, I want to be a part of who I am for the rest of my life. And work hard, be happy, enjoy your work, and yeah, I think Sunny those are sir, a few things. this side. Sunny sir. Okay, sorry. नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है, ऐसे कोई नाराजगी नहीं है। जी वन लास्ट क्वेश्चन, रेखा जी आप पूछ रहे हैं, कौन पूछे? मैं सूरज जी कोई बात नहीं, मैं लड़नी करनी है हमने, लड़ना नहीं है, सब बढ़िया। सूरज जी मेरा सवाल आपसे है, आपके राइट रेखा जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। नहीं मैं हूँ। नहीं मैं आ रहा हूँ। जी राजवीर आप बताएं। Yes, ma'am. I apologize. What Dad has taught me is dedication and determination. I mean, he has the strongest back ever. He carries our whole life on his back. And to never give up and work hard. And as I said, you don't focus on becoming a superstar. You don't focus on becoming... एक पिता को अपनी विरासत पुत्र को सौंपनी ही पड़ती है, लेकिन इस वक्त आपके मन में क्या हलचल है कि वो परंपरा तो सही हाथों में है, लेकिन आगे भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? जी भविष्य तो हम लोग जितने हैं, हम लोग तब भी खुश होते अगर ये बच्चे एजुकेशन चुनते, मेडिसिन चुनते। इन्होंने फिल्म्स चुना तो एक अलग ही प्राइड है। और भविष्य तो सिर्फ मेहनत पे डिटरमिन करता है, क्योंकि मेहनत आप इसको रोज़ी रोटी माने, क्योंकि यही चीज़ इतनी दुआएं मिलती है। मैंने तो यही बोला अवनीश को कि जब प्यार मिलता है लोगों से तो बहुत बहुत ज़्यादा मिलता है उसका। वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल एंड फुल ऑफ वैल्यू, मतलब वी मस्ट गिव इट फुल वैल्यू। बाकी आज जो मुझे महसूस हो रहा है तो 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, महावीर जैन जी यहाँ बैठे हैं, एंड जियो से
the team is here, and I'm so grateful to Jyoti ji to trust a film with newcomers, trust a vision of a young man, and to trust the story, trust this whole project. So I'm very grateful she couldn't come here, Jyoti ji. Baki, I'm very grateful for Poonam ji, Ashok ji for trusting the daughter to us. For me, it is 3 children being launched. And I have to say, Karan, I like to say, मैं हमेशा सुनता था ना बॉबी जी से कि सनी जी जैसा कोई बड़ा भाई नहीं. मतलब honestly, during these last 2 years, 3 years, 2 बार पोस्टपोन है हमारी पिक्चर. मैं भागा हूँ सनी जी के पास. मैंने कहा सनी जी कैसे करें? And the confidence he gave to us, सनी जी, I'm telling you in front of you, एक ऐसा हमेशा एक मिला है कि नहीं बनाएंगे पिक्चर, अच्छी बनाएंगे. So thank you सनी जी. And lastly, I remember my father, Komal ji. This is I would like to share with you that 2019 he was not well. We were taking him to the hospital, and his last words to me were that इसकी film अच्छी तरह से बनाना. So everyone here, the technicians, Kanika, Rohan, everyone, Manik, and all the technicians here, they've all helped in spite of COVID, in spite of all the, just that one dream कि एक अच्छी film बने. So that is what I'd like to say. Sunny sir, Poonam ma'am, towards your left, right here, standing over here. Sunny sir, Poonam ma'am, सबसे पहले बहुत बधाई हो आप दोनों को. I'm sure you all are feeling very, very proud today. You all have done some great films together. Saware Wali Gaadi, Samundar, cult film Soni Mahiwal. When you all saw Rajveer and Paloma on the screen, did that reignite memories of the stuff you all did together? Did that bring back a lot of memories? I have been watching Paloma for quite some time while they've been working, and I've seen them on the screen. I've seen the film earlier also. Memories तो आदमी इस वक्त तो बस ये अपने बच्चों के बारे में सोचता है कि इनको देखता है, and the way they are performing over there, you start डर लगता है, और जब अच्छा काम करते हैं लग रहा है अच्छा हो रहा है, suddenly that dirt turns into pride, and then it gets into joy, and you get confident, and that's what I'm feeling right now. Poonam ji? I would say that I was so happy that they were coming together after Sunny and me did such amazing films together, and people did like us on screen a lot, so I'm sure that same. And they do look very good together on screen and otherwise too. So I'm so happy with the pairing, because that's half the battle won, you know, when you look good on screen together and you complement each other. In fact, एक मुझे इनसे गिला है, मैंने एक सनी की और मेरी तस्वीर इन्हें दी थी when they were shooting outdoor in Maldives. I said, can you all create this picture so we can use it? इन्होंने 1 महीने में नहीं ली वो तस्वीर. So I'm like, okay guys, this much we can do. Soni Mahiwal की एक तस्वीर थी. I was hoping that recreate that for us. But I'll still make them do. I'm also not going to give up. बाकी 5th October को we'll get to see on the big screen the magic. I know बड़े सारे सवाल हैं, but वक्त की भी बात होती है. तो thank you so much, ladies and gentlemen, for being amazing. Give it up for this amazing team one more time. माफी चाहूँगा जिनके सवाल नहीं ले सका. We'll have a quick photo op, and Avnish. Karan, of course, Karan, we want you up on. No, you have to come here. We'll have a quick family picture. Anmol, come please, come better. And after this, we'll have Avnish invite the cast and the crew, the remaining cast and the crew of the movie. Thank you so much for being so amazing. And हाँ कोई नहीं, मैं तो बस thank you तो कह दूँ ना आप लोगों को. अच्छा काम कर रहे हो, इतना सब मजा आ रहा है. ना मैं नहीं कर रहा था कुछ इंतजार. Avnish ji. One final thing, sorry. One final thing. The film is not made just by me. It's been made by the entire team. It's always been. For the lovely music.
Arman, please. Yeah. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being so amazing. Give them a big, big, big round of applause one more time. And yeah, आप लोग ने जो पेशेंस दिखाई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. इतना ज़्यादा, इतना कमाल का इंटरैक्शन, बड़े दिनों बाद हुआ है. तो थैंक यू सो मच टीम राजश्री एंड ऑफ कोर्स सब लोग यहाँ पे आए हैं. Congratulations one more time. Thank you so much for being amazing. सफर